Morning students, I hope you all are doing well at your places, and today we'll be studying about nouns, that is number, right? That is singular and plural, that denotes only one person and animal thing, that is one, that is singular, in which that is the naming word which denotes more than one, of course they are plural. So let's just begin with this noun number. Title of our chapter is the noun number, right? How many numbers of noun are there in English? You can take the help from your teacher. You can write down here, right? So a noun has two numbers, that is singular and plural. First one is singular, a noun which refers to only one thing. एक के लिए होता है, इसको हम बोलते हैं singular number, like boy, right? Girl, book, ball, chair, etc. Whereas second one is plural, a noun which refers to more than one thing. इसको हम बोलते हैं plural number, like boys, girls, books, chairs, tables, etc. Right? How we can form of plural nouns? Now, as general rule, the plural of a noun is formed by adding s. कि आप s add करेंगे to the singular form, like आम का arms, bird का birds, dog का dogs, horse का horse, etc. Right? But this rule does not apply in the following cases. जैसे कि to form the plural of a noun जो end कर रहे हैं s से, x से, z से, ch, ss, sh, and of course उस पर हम क्या ऐड करेंगे, es. जैसे कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, राइट? ड्रेस का इट्स ड्रेसेस, ब्रांच का ऑफ कोर्स इट्स ब्रांचेस, एस का एसेस, राइट? फॉक्स का फॉक्सेस, ब्रश का ब्रशेस. देखिए आप इसके एंड में एस एच आ रहा है, जिनके एंड में एस, एक्स, जेड, सी एच और एस एच आता है उनको हम क्या ऐड करते हैं, दैट इज ई एस, राइट? बेंच का बेंचेस एंड गैस का गैसेस, राइट? नेक्स्ट वन इज बंच का bunches, then box का boxes, right? Now to form the plural of a noun जिनके लास्ट में आ रहा है y and they are preceded by a consonant sound, we have to change y to I and of course es. I and of course es, right? Baby का babies, y को हटा के, country का countries, army का armies, city का cities, right? Body का bodies and duty का duties, right? Now, but to form the plural of a noun which is ending with y with a vowel sound, then we will be adding only s. जैसे कि boy का boys, day का days, donkey का donkeys, right? Singular हो गया ये, और ये हो गया इसका plural again. Holiday का holidays, journey का journeys, आप normal कर रहे हैं. Key का keys, right? Monkey का monkeys, ray का rays, right? Valley का valleys. Now, to form the plural of a noun जिनके end हो रहे हैं लास्ट में o with a consonant sound, then we will be adding es. जैसे कि लास्ट में o आ रहा है, buffalo, और consonant sound है इसलिए क्या हो गया, buffaloes हो गया. eco का ecos हो गया, right? hero का heroes हो गया. mango का mangoes, negro का negroes and tomato का tomatoes, right? But to form the plural of a noun ending with y जिसमें vowel आ जाए before we add, then we will be adding s only. जैसे रेडियो का रेडियोस, देखिए o आ गया लास्ट में बट इससे पहले क्या है, वॉवल. बैम्बू का बैम्बूज, कुकू का कुकूस एंड पियानो का पियानोस, राइट? नाउ टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ अ नाउन एंडिंग विद f एंड fe, ठीक है, वी विल चेंज f एंड fe टू ves. f को हटा के ves लगा देंगे. काफ का काफ्स, नाइफ का नाइफ्स, लीव का लीव्स, राइट? देन इट्स लाइफ का लाइव्स, सेल्फ का सेल्व्स, राइट? एंड शेल्फ का शेल्व्स, राइट? नाउ बाय कुछ नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में एफ और एफ ही आता है बट देयर प्लूरल इट इज इन द नॉर्मल वे, राइट? चीफ का चीफ्स, ड्रॉफ का ड्रॉफ्स, ड्रॉफ मीन्स बोना, हूफ का हूफ्स, राइट? प्रूफ का प्रूफ्स, रूफ का रूफ्स एंड सेफ का सेफ्स, राइट? कुछ इरेगुलर प्लूरल्स भी बनते हैं जैसे कि चाइल्ड का चिल्ड्रन, इसलिए चिल्ड्रन के साथ हम एस नहीं लगाते हैं. ऑक्स का ऑक्सन, राइट? मैन का मैन, वुमेन का वुमेन, फुट का फीट, गूस का गीस, इसी तरीके से माउस का माइस, लाउस का लाइस, मतलब जुएं जो हो जाती है, टूथ का टीथ. टूथ मीन्स एक दांत और टीथ मीन्स सारे दांत. अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स द प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड. आप नॉर्मल सा प्रिंसिपल वर्ड में एस लगा दीजिए. डॉटर्स इन लॉ, राइट? फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, राइट? सन्स इन लॉ, lookers on and passers by. Now, but the following compound nouns, they will take a plural, double plural. Man servant, men servant हो जाएगा. Woman teacher का woman teacher, right? There is a fact file. कुछ nouns होते हैं, they have same form for both plural and singular. So जैसे कि deer, sheep, fish, dozen, score, 100,000, इन सब का plural ही रहता है, right? The following nouns have a plural form but always take singular. हमेशा singular verb होती है. जैसे कि news, civics, जैसे news is,
Civics is my favorite subject. तो is क्या है? Singular verb है. Politics, physics and mathematics, right? This news is true. Physics is a difficult subject. देखिए ये is जो है ना, this is a main verb. Following nouns, they are always used in the plural form में use होते हैं, and they take the plural form as hanks, scissors, trousers, pant, measles, mumps. ये सब इनके साथ क्या होगी? Plural. My thanks are to you all. The scissors were blunt. Scissors already जो है वो plural है, बट उसके साथ plural verb भी आती है. इंग्लिश में जो नंबर ऑफ नाउन्स हैं, ऑफ कोर्स देयर आर टू टाइप्स, सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर में ओनली वन पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. Plural denotes more than one person, place, animal and thing. Moving on to the exercise, first we'll be doing the correct options. Types of number in nouns are, of course, there are two, right? This is the singular noun. Singular noun is civics. This is the plural noun, scissors. Physics, no. You have to fill in the blanks with the correct form of verb which is given in the bracket. The dash our crying. देखिए बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, children आएगा क्योंकि यहाँ वर आ चुका है, right? Dash is not true. This news is not true. देखिए news plural है लेकिन ये singular verb है, right? Dash is the difficult subject, of course, physics. She has a white pigeon. This house has 2 rooms. 2 rooms हैं, and I have lost my watch. So that was all about noun number. Please go through all the rules that how we can form plural and keep revising and stay blessed. Thank you.